Please see. First of all, you will write carboxylic acid have higher boiling point than comparable aldehyde ketones and even alcohols. This is due to extensive hydrogen bonding between carboxylic acid molecules. And if you wrote this, please see me. Now, please see how carboxylic acid they actually exist and what is the meaning of this extensive hydrogen bonding. Okay, please see here, guys. When I draw the structure of carboxylic acid, it is something like this: R. Please see, don't write anything. C double bond O. And then we have O and H. Now, another carboxylic acid molecule can be shown like this: H, that is bonded with oxygen atom, which is further bonded with carbon, which is having a double bond with oxygen, and then another alkyl group. So this is a carboxylic acid, and this is one carboxylic acid only. Okay, so let us suppose this R is CS3. So this is acetic acid, and I have considered two molecules of acetic acid. But please remember, these are inside the container. Okay. Now, as you can see, just a second. Yeah, as you can see, this carbon atom is attached with oxygen, and this oxygen is further attached with hydrogen atom. So hydrogen atom will be having a delta positive charge because it is attached with oxygen atom, which will be pulling electrons from the hydrogen atom because of higher electron negativity. This hydrogen will be also having delta positive. Now both of these hydrogen will be attracted by the lone pair that is present on the oxygen atom like this. This oxygen is attracted to this oxygen atom. Now, this is the reason they exist as a dimer. So we had two different carboxylic acid molecules. We have two different carboxylic acid molecules, and they are dimerizing. They are becoming one entity. So this is known as dimerization. And this is the form, dimer form of carboxylic acid. It is present in vapor phase and in aprotic solvent. चलिए, please write this down. यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा इस तरह से. Carboxylic acid dimerizes in vapor phase and aprotic solvent. Raise your hand once you're done writing.
Please raise your hand once you're done writing. Prabha, how are you? Better, sir. You're better. Okay. Everyone is done. So, right, next point regarding solubility. एक चीज आपको पता चल गई that till now we had alcohol as the one which is having the highest boiling point. अब हमारे पास highest boiling point किसका आ चुका है? Carboxylic acid का. ठीक है. Right, next regarding solubility. Carboxylic acid can form hydrogen bond with water. Therefore, they are soluble in water. Okay. Now, again, the same, very similar reason as we have seen in alcohols also, that alcohols, aldehyde, ketones, and all of these things, we have seen that. If I take carboxylic acid, R, C double bond O, and here we have OH, right? So if I talk about the hydrogen bonding, so hydrogen bonding में अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरह से बात करते हैं, oxygen is here and it is having one hydrogen here, it is having another hydrogen here. Now, if I talk about the hydrogen bonding, this oxygen will be attracted to this particular hydrogen, and this oxygen of water molecule, this will be attracting the carboxylic acid hydrogen atom. Now, the important part to see here is there are two different sections in the carboxylic acid. That is the carboxylic acid group, and the other section that you have to see is this alkyl group. Now, please remember the alkyl group is not doing anything for the solubility. Whatever work is done, whatever attraction is there, it is only due to what? Only due to the carboxylic acid. Can you see that? Now, if alkyl group, it is what? It is the non-favorable part. It is unfavorable for solubility. Unfavorable for solubility, right? So if I am going to increase the number of carbon atom in the alkyl group, the unfavorable part is going to increase. जब unfavorable part increase होगा तो solubility क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Shaviz, Tarif, Shahid, and Rabah. हाँ जी बताएं. ठीक है. So please write here as the number of carbon atoms in alkyl group of carboxylic acid increases, the solubility decreases. ठीक है, आखिरी पॉइंट बस लिख लेंगे. Carboxylic acid are also soluble in organic solvents. Raise your hand once you're done.
व्हाट हैपेंड मदिया, बहुत थक गए हैं क्या स्कूल से आने के बाद? Yes, sir. क्यों, आज कुछ गेम सेम था? So today we have the national Day celebration at school. अच्छा, टुडे वाज सॉरी नेशनल डे। No, it's on Saturday, but then like we celebrated like on Sunday we have संडे यू हैव व्हाट? a holiday. अच्छा, सो यू सेलिब्रेटेड टुडे। व्हाट मीन, आपने कुछ किया क्या स्कूल में? So I actually participated in like Teachers' Day. So I didn't participate so nationally, but like I was just there. Just being there was also exhausting. Yes, so it was a long day. अच्छा, ओके। सबके स्कूल में था क्या? शावेज, शाहिद? शावेज, आपकी भी आवाज नहीं आ रही कभी कभी। ठीक है, चलिए, यू कैन लोअर योर हैंड एंड देन write the next topic, chemical properties of carboxylic acid. So in this number one, you will write the acidic character. Okay, number one, you will write the acidic character. Now, in acidic character, first of all, we will be writing the reaction with metal and alkalis. Metal and alkalis. So if you have carboxylic acid RCOOH, you react it with metal. So acid, when it reacts with metal, it forms a salt that will be RC double bond O, COONA, plus it liberates hydrogen gas. It liberates hydrogen gas. Similar reaction is given when you have carboxylic acid and it reacts with alkali such as NaOH. So here also it will be giving RC double bond COONA. But when acid and base they react, they will give you salt and water. They are going to give you salt and H2O. Okay. Now there is one more thing. The carboxylic acid can also react with metal carbonates and bicarbonates. So you can react with Na2CO3 and you will be getting the salt RCOONA plus CO2 and H2O. Similarly, you can react this with carboxylic acid, a reaction with, you can have sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate. This will be RCOONA. Again have CO2 and H2O. Okay, so all of these reactions are from class 10th itself. Okay. In class 10th, we had the first chapter, chemical reactions and equations. All of these questions, all of these reactions are already there. Raise your hand once you're done writing.
Assalamualaikum Iram. Why are you late, Iram? Hmm? तो क्या थे क्या? What happened? Everything's fine. Yes, Iram. Is everything okay? You're not well. क्या हो गया आपको? लास्ट क्लास तक तो ठीक थे आप. सबको कुछ ना कुछ हो रहा है. हर क्लास में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है. इज इट सीरियस या फिर क्या? टेस्ट वगैरह कराया आपने? चलिए ठीक है. अल्लाह ताला जल्दी शिफा अता करे आपको. है ना? ऐसे भी हाँ पे वगैरह आ रहा है. ठीक है. ख्याल रखिए आप लोग. ठीक है अपना. हर बैच में ऑलमोस्ट एक दो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं अभी. मौसम चेंज हो रहा है क्या वहां पे अभी सऊदी में? मौसम चेंज हो रहा है. अच्छा. ओके. शाहिद डन राइटिंग. सबने लिख लिया. शाहिद यूर डन राइट. हाँ ठीक. चलिए. देखिए ध्यान से देखिए. सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, है ना? तो ये CO2 देता है. इट गिव्स आउट व्हाट? CO2. नाउ इफ यू रिमेंबर, giving out of CO2 can be used as a test. From 11th, sorry, from 10th standard, you know, there is a word known as brisk effervescence. सुना है लोगों ने? Brisk effervescence सुना है ना? So see, both of these reaction can be used for the detection of carboxylic acid group. So please write reaction of RCOOH, that is carboxylic acid, with Na2CO3 or NaHCO3 gives carbon dioxide, that is with brisk effervescence. With brisk effervescence. This reaction can be used as a test for the presence of carboxylic acid. ठीक है. आपसे अगर सवाल किया जाए इस तरह का, how will you distinguish between propanol and propanoic acid? ठीक है. तो आपको क्या लिखेगा? Using Na2CO3. Propanol plus Na2CO3 will not give any reaction, and propanoic acid 1,2,3 COOH
plus Na2CO3 will give COONA plus CO2, यहाँ पर लिखिएगा brisk effervescence plus H2O. All of you done writing? Yes or no? Please tell me. Raise your hand once you're done writing. What happened? Tarif, Iram, Rabah, your videos are not on. Can you please turn your videos on? Writing. And so you have some issue in that. Yes, sir. By next week, I'll fix. Okay. Rabah, what about you? Yes, sir. आप लोग प्लीज क्लास के लिए इसी तरह बैठे कि आपको वीडियोस ऑन करना है ना? चलिए. Tarif, you are still writing or what? Yes, sir. Oh, just raise your hand once you're done. Keep your hand raised, guys. Those who are done. Rabah, just waiting for you now. Okay, everyone is done. This is the acidic character in the sense that the reaction that support the acidic behavior of carboxylic acid. Okay. So see, if they ask you, na, carboxylic acid are acidic in nature, explained by reaction. Explained by a reaction. तो आप इन चारों में से कोई एक भी reaction लिख सकते हैं. Is that clear? Yes or no, please tell me. ठीक है सबको? अब सुनिए जरा. अगला है आपके पास acidic strength, B part. You guys can lower your hands now. B part is the acidic strength. Yes, sir. ध्यान से देखिए. Lower your hand, shall we? ठीक है. Now, if I talk about the acidic behavior of carboxylic acid, it is only because of the dissociation of H plus ion. So you have R, C double bond O, OH. This will break into R, C double bond O, O negative, and H positive. Correct? Now, the Ka of acid can be written as the dissociation constant of an acid. Ka, the product upon reactant. So what is the product? R, COO negative, the concentration of product, into H positive divided by the concentration of reactant, that is R, COOH. Okay? This is the dissociation constant. Now, please tell me what will happen if there is more amount of dissociated particles. है ना? ये तो associated form हो गया ना carboxylic acid. If there is more dissociation, yani ki we will be having more products. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Keep your mic on. Can you please keep your mic on for this section? All of you guys. Madiha, Shahid, Rabah, Iram, Tarif. जल्दी mic on करें. मदीहा, Rabah. लिखो मत अभी. Rabah, कुछ लिखना नहीं है अभी. Mic on करें सर. हाँ, ठीक है. Thank you. If we are having more dissociation, अगर हमारे पास dissociation ज़्यादा होगा, so we will have more number of particles in the product side.
द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर. करेक्ट है गाइस? हाँ ना बोलो. Yes. यस और नो? यस और नो? Yes. हाँ मदिया बोल रही है सिर्फ. शाहिद, शावेज, रबा. रबा सुन ही नहीं रही. कहाँ है आप रबा? Sir, so yes, sir. I told yes, sir. हाँ तो की फिर माइक ऑन. ठीक है. इफ यू आर हैविंग मोर डिसोसिएशन देन, ध्यान से सुनिए. मोर डिसोसिएशन का मतलब मोर प्रोडक्ट. मोर प्रोडक्ट का मतलब मोर एच प्लस भी. हाँ या ना? मोर Yes, एच sir. प्लस. ठीक Yes, है. sir. And also I can say that the numerator value is higher here. Correct है guys? अगर न्यूमरेटर बढ़ा तो Ka क्या हो जाएगा? बड़ा. That means I can say that therefore if I have more H plus means More K value. Ka is also higher. Therefore strong acids have higher value of Ka. याद रहेगा इतना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी उलझन तो बताएं. नो प्रॉब्लम. क्लियर? ध्यान से सुनिए. कहानी खत्म नहीं हुई, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. नाउ देर इज अनदर वर्ड विच इज जनरली यूज्ड. के उतना यूज नहीं किया जाता है. यूज किया जाता है पीके. व्हाट डू वी यूज? टेल मी गाइस. इन ऑर्डर टू कंपेयर व्हाट डू वी यूज? आवाज ही नहीं आ रही किसी की. बोलो भाई, थोड़ा जोर से बोल लो. PK. पीके है ना? पीके इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन ही होता है माइनस लॉग ऑफ के ए. माइनस लॉग ऑफ व्हाट? माइनस लॉग ऑफ K. के. अब ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल. अगर आपके पास H प्लस होगा ज्यादा, then I can say that what? Ka will be also higher. बोल सकते हैं ऐसा? Yes. अगर H प्लस ज्यादा, यहाँ है ना H प्लस ज्यादा तो Ka ज्यादा. अच्छा, Ka अगर ज्यादा तो log of Ka भी ज्यादा. सही है? ध्यान से सुनते रहिए बस. log of Ka अगर ज्यादा तो अब एक बात बताइए. इफ आई हैव माइनस लॉग ऑफ Ka, अब देखिए 2 और 5 में से कौन बड़ा? विच इज ग्रेटर? 5. 5. लेकिन अगर हम माइनस साइन लगा दे, -2 और -5 में कौन बड़ा? Minus. -2. तो जिसका पॉजिटिव बड़ा था उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? कम. अरे बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है. इफ माइनस लॉग के इज लेस, व्हाट इज माइनस लॉग के? माइनस लॉग के इज नथिंग बट इट इज पीके ओनली. सो पीके विल बी लेस. फ्रॉम हियर आई कैन से स्ट्रॉन्गर एसिड विल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके क्या होगा? ज्यादा या कम? Come. कम. तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अभी नहीं लिखिएगा, सुन लीजिए जरा. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ पीकेए. आप हैं कहाँ रबा? बच्चे संभाल रही हैं क्या आप? किसी के कजन वजन आए हुए हैं? हाँ नहीं sir. मेरी बहन के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं. अच्छा ठीक. अब ये जरा बिल्कुल याद रहना, ये बातें बिल्कुल याद रहनी चाहिए आप लोग को. ठीक है ना? बिल्कुल याद कर लीजिए. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ पीके. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हायर वैल्यू ऑफ के.
रबा को बच्चों ने भगा दिया। आपकी तबीयत ठीक है आज रबा? यस सर, आज ठीक है। एक ठीक हो रहे हैं एक। इरम आपको हुआ क्या, थोड़ा बताइएगा हमको चैट में, अचानक से क्या हो गया आपको? तारीफ का इंटरनेट आज बहुत ही खराब है। अच्छा वायरल फीवर। अच्छा आपके स्कूल की एक ने, लेकिन वो आपको नहीं जानती है। आपके स्कूल की एक नई स्टूडेंट आई है 12th स्टैंडर्ड की, इरम। उनका नाम है सफिया, नाम है शायद उनका, बट वो आपकी क्लास में नहीं है। उनके यहाँ दूसरा चैप्टर चल रहा है। आई मीन यू आर स्टिल डूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना इरम, या हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? चल रहा है अभी? नहीं, उनका हो गया। हाँ तो एक, हाँ एक खबर आप लोग की ठीक, उससे याद आया हमें। इफ यू वांट टू अटेंड द क्लासेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मदीहा एंड इरम, आई थिंक आप दोनों ने कहा था, तो यू कैन अटेंड इट ऑन सैटरडे संडे 4 p.m. KSA time. Are you guys available, Madiha and Iram? so we have class. I have classes that day. इरम खाली है, अच्छा आपकी क्लास होती है उस टाइम सैटरडे संडे 4:30 मतलब 6:30 अपना ना इंडियन टाइम। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। हाँ ठीक है, हाँ सैटरडे संडे को। ठीक है इरम, आप अगर आना चाहें आइएगा आप। Yes. ठीक है, तब हम आपको मैसेज करवा देंगे। एक क्लास वहां पे हुई है लगभग आधे घंटे की, वो ट्रायल टाइप का था। उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, आज शायद अपलोड हो गया हो। आई विल फॉरवर्ड दैट टू यू। उसमें वर्नर्स थ्योरी बस हमने कराया है। हाँ चलिए ये सवाल करें जरा आप लोग। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस। टू द क्वेश्चन एंड देन सेंड दी आंसर ऑन जूम चैट इटसेल्फ, है ना? एक ऐसे कर लीजिए आप इनको, ABC कर लीजिए, ठीक है ना? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। A का ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा, या C का ज्यादा होगा, ग्रेटर देन स्मॉल लेस देन का साइन देके करना था। का आंसर आया है। अदर्स प्लीज आंसर गाइस। Shahid has also answered. दो लोगों का बिल्कुल अलग आंसर आया है, दो लोगों का बिल्कुल है। हाँ इरम ने ठीक कराया, बट देखिए सही है आपका आंसर। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल आए ना जब आपको, तो सबसे पहले यू हैव टू प्लीज सी हियर गाइस, प्लीज सी हियर ऑल ऑफ यू गाइस, यू हैव टू टेल अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पीके ओनली, राइट? है ना? तो आपका, आप ये बताइए पीके आई कैन से ना इट इज इनवर्स, अच्छा रादर देन आई शुड राइट अपोजिट में, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके।
करेक्ट है गाइस, ऑल ऑफ यू टेल मी, है ना? अगर पीके ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, पीके कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, है ना? आप सबसे पहले क्या कीजिए, यू अरेंज द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ पीके। अगर हम पीके को अरेंज करें, सो विच इज हैविंग द हाईएस्ट पीके, टेल मी गाइस। ए का सबसे ज्यादा पीके, उसके बाद किसका है, बी का, एंड उसके बाद सी का। सो इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बस ए ऐसे रहेगा, बस साइन चेंज कर देना आपको। और समझ में आई सबको? देखिए कभी भी आपको ना मिस्टेक नहीं होगा, आप क्या कीजिए, व्हाट इज गिवन उसको आप अरेंज कर लिया कीजिए, एंड फिर रिलेशनशिप देख लीजिए। इफ इट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप तो सेम विल बी द ऑर्डर, आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ अगर इनवर्स है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ट्रैविस ने इधर फोटो भेजा, सही। Write this down quickly. ठीक है, अब ध्यान से देखिए। प्लीज सी, एक सवाल है आपके पास, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल, इन दोनों के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस। तो ध्यान से आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो लिखना रहेगा लिखिएगा, ठीक है? प्लीज हियर। इफ आई टॉक अबाउट फिनॉल, फिनॉल विल बी OH, it will dissociate into, the hydrogen of phenol will be dissociating, it will have O negative plus H positive, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन, this is phenol. If I talk about the carboxylic acid, carboxylic acid you will have RCOOH, this dissociates into RCOO negative and H positive, ठीक है? And H positive, this is carboxylate ion, this is carboxylate ion. Now आप एक बात बताइए, इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात आएगी, तो वहां पे वी आर गोइंग टू लुक एट वन ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। व्हाई? देखिए, अगर ध्यान से सुनिएगा एक बात को, इफ माई फेनॉक्साइड आयन स्टेबल, अगर मेरा फेनॉक्साइड आयन, अच्छा H प्लस और H प्लस को कंपेयर करने से कोई फायदा, पहले ये बता दीजिए आप, कोई फायदा होगा? H प्लस नहीं, कोई फायदा ना। H प्लस की जो स्टेबिलिटी फिनॉल में रहेगी, वही H प्लस की स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। सो देयर इज नो नीड टू कंपेयर H प्लस एंड H प्लस। अच्छा ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज बचा क्या है, हियर यू हैव फेनॉक्साइड आयन। इफ माय फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, अगर फेनॉक्साइड आयन स्टेबल है, अगर फेनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो दिस बॉन्ड कैन बी इजिली ब्रोकन। यहाँ पे जो OH बॉन्ड है ना, this OH bond can be easily broken because we are going to get a stable molecule. Same case यहाँ पे भी है, if carboxylate ion is more stable, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो OH बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, बिकॉज द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट विल बी स्टेबल, R C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है? सो दिस बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन। अब बात आ जाती है कि विच इज मोर स्टेबल, फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है या कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है? नाउ लेट अस लुक एट द फेनॉक्साइड आयन। In phenoxide ion, you will see that there is resonance. You see here O negative. So here you can see that O negative will go here, this bond will go here, and you will have resonating structure like this. Here you will have double bond O. Here you will have negative charge. Then here you double bond and another double bond. Then if it moves here, this pi bond will break. And it will move here. So you can see that there is number of resonating structure that is possible. What about the carboxylate ion? So carboxylate ion, it has only two resonating structures, which is like this: carbon double bond. Oops, my bad. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको. And O negative. So here you can have a resonating structure like this.
R CO negative and double bond O. Now phenol has more number of resonating structure. ये बिल्कुल पक्की बात है because you can see that एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास this negative charge will move here, so it is having approximately 5, है ना, 3 इधर, हाँ, it is going to have 5 resonating structures, but carboxylic acid only has 2 resonating structures. तो expected था यहाँ पे, expected क्या था, it was expected that acidic strength of phenol should be greater, क्योंकि phenoxide ion ज्यादा stable है, phenol should be stable than carboxylic acid, but it is not the case. Why? ध्यान से देखिएगा अगर आप, if I draw the resonating hybrid structure ना, तो resonance hybrid structure जो बनेगा phenol का वो कुछ इस तरह से बनेगा. Here we will have O negative, all the bonds will be partial double bond, ठीक है. Delta negative charge, ये भी partial negative partial double bond, delta negative charge will be here, here, and delta negative will be here. Now, if I make the resonance hybrid of carboxylic acid, यहाँ पे आपके पास R, C, O and O, and both the oxygen atom will be having the delta negative charge because the charge is only shared by oxygen atoms. अब एक बात बताइए, here the charge is shared by carbon atoms, which is less electronegative. What is electronegativity? The tendency to pull electrons, electrons को रखने की क्षमता. In carboxylic acid, the electrons or the delocalization is happening only on oxygen atom. तो सबसे पहली बात तो ये दोनों resonating structure, इसको बोलते हैं equivalent resonance. क्या बोलते हैं? Equivalent resonance. Now, when we have equivalent resonance and the electron is shared by the electronegative element only the electronegative element is having delta negative charge. So obviously that negative charge will be very stable on the oxygen atom and not as stable. आप ये समझिए ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इट विल बी वेरी अनस्टेबल बिकॉज कार्बन इज नॉट अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे. ऑक्सीजन तो चाहता है मेरे पास क्या रहे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे. सो ऑक्सीजन कैन बेयर द नेगेटिव चार्ज मोर इफेक्टिवली rather than carbon. And here we are delocalizing the electron only on carbon atoms. And यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन एटम में करें. That is why even though it is having less number of resonating structure, the carboxylate ion is more stable. और यही इसी तरह से बिल्कुल सवाल है कि NCERT में. Although phenoxide ion has more number of resonating structures, phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion. Carboxylic acid is a stronger acid than phenol. Why? Carboxylic acid ज्यादा स्टेबल है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, फेनॉल से. वो इस वजह से, क्या रीजन है? ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली ऑन द ऑक्सीजन एटम. पहले इस चीज को पूरा लिख लें, यहाँ पे आपके पास ड्राइंग की गई है, ठीक है. देन आई विल राइट द स्टेटमेंट जो आपको एग्जाम में आंसर लिखना है. Raise your hand once you are done drawing all of these things.
Madhya, write it quickly. Madhya, Madhya and Shaviz, you are still writing? Shaviz, हो गया नहीं हुआ? हो गया, चलिए ठीक है. You will write here. Carboxylate ion, write this with me. Carboxylate ion is stabilized by two equivalent resonance, two equivalent resonating structures in which negative charge is on more electronegative oxygen atom, but in phenoxide ion, the resonating structures are non-equivalent and negative charge is also on less electronegative electronegative है ना, छोटा लिख दिया हमने, less electronegative carbon atom. Therefore, carboxylate ion is more stable than phenoxide ion, and RCOH is more acidic than phenol. Okay. I hope everyone has written this down. After this, you are going to write the C part of this acidic character or acidic strength. Effect of substituent.
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी हम लोगों ने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिपेंडिंग ऑन दी स्क्रॉल अप। अच्छा अच्छा, Done, sir. this here guys, effect of substituent. And Sunita, you've just seen that acidic strength of carboxylic acid depends on the stability of carboxylate ion. Stability of carboxylate ion. Now, if you look at carboxylate ion, so this carboxylate ion is like this. Please don't write this now. There's me. And the electrons are like this with a delta negative on both the oxygen atoms like this. Now, if we are going to add a electron withdrawing group, ध्यान से देखिएगा. If we add a electron withdrawing group is present on the carboxylic acid electron withdrawing group, then what the electron withdrawing group will be doing? This delta negative charge is present ना, उसको वो क्या कर लेगा? Pull कर लेगा. If the negative charge is pulled, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि negative charge कम हो जाएगा. So we can say that charge density will decrease. अब जैसे ही charge density decrease करेगी, charge कम हुआ तो stability ज्यादा, stability will increase. And as the stability of carboxylate ion increases, the acidic strength will increase. And as acidic strength increases, what will happen to pKa, guys? pKa क्या हो जाएगा, ज्यादा या कम? pK will be higher or lower? क्या मदीहा? लोअर. ठीक है, आवाज आपकी नहीं आ रही उतनी खास आज मदीहा, ठीक से नहीं आ रही आवाज. Now, if we have the same thing but electron withdrawing group की जगह अगर आपके पास electron donating group आ जाए, ठीक है, if we have electron donating group, तो scene यहाँ पे कुछ और हो जाए. We have electron donating group. यहाँ scene क्या होगा? The electron will be given towards the carboxylate ion and the charge density will increase. If the charge increases, stability will decrease. As stability decreases, the acidic strength will also decrease and the value of pKa will increase. Please write this down. Let me know once you're done. जल्दी जल्दी लिखो.
Please raise your hand once you're done, guys. मदीहा, शाहिद, रबा, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? ये इनका कैमरा क्यों हो गया ऑफ हो जाता है बार बार? रबा की तारीख इज ऑल्सो, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज जो याद कर लेनी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इज नहीं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। प्लीज मेरे साथ लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बेंजीन रिंग या फेनाइल रिंग, इसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर होता है। देन वी हैव आयोडीन, followed by bromine, followed by chlorine, followed by fluorine, followed by CN, nitrile, followed by nitro group, and then the highest is of CF3. Highest is of CF3. After this, you will do this question. बस हम एक चीज आपको बता देते हैं, ये जो आपको लिखा है ना CO2H, that is actually CH3, and we have COOH versus CH2. This CH2, it is having a fluorine group here, which is further bonded to COOH. इसको कर लीजिए आप A, इसको कर लीजिए आप B। A और B में कौन ज्यादा है? Which is more acidic? You see, if there is any of these group attached ना, आपको उन ग्रुप्स को कंपेयर करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, if you have attached, if there is any electron withdrawing group on the carboxylic acid, या फिर उस पूरे कंपाउंड में if you have any electron withdrawing group, that carboxylic acid will be more acidic। ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है आपके पास वो कुछ इस तरह से है। Here we have CH2, same thing with COOH, and here we have what? Here we have fluorine versus the B structure is CH2 as it is, COOH, and here we have chlorine। चलिए पहले वाला बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा होगा ज्यादा एसिडिक? A और B, which is more acidic in the first case? Yes, मदीहा, करेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी आंसर करें। हाँ, वेरी गुड एरम, सही है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, शाहिद A कैसे होगा? शाहिद B होगा ना। हियर वी हैव फ्लोरीन। हाँ ठीक है। सेकंड का, हाँ मदीहा करेक्ट, वेरी गुड मदीहा। सेकंड का आंसर करें सब लोग। आई एम राइटिंग द थर्ड स्ट्रक्चर नाउ। थर्ड स्ट्रक्चर के लिए आई विल काउंट द कार्बन एटम्स। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। We have 1, 2, 3, 4 carbon atom. Fourth carbon atom is having carboxylic acid like this, and then CH2F. First carbon atom is having a fluorine group. और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। Versus I have here 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon once again. 2, 3, 4 carbon atoms. COOH, and I have fluorine in the second carbon atom. ठीक है। चलिए सेकेंड वाला, वेरी गुड। थर्ड वाला बताएं कहाँ पे ज्यादा होगा? रबा ये आंसर आपका सेकंड के लिए है क्या? राइट नाउ यू हैव गिवन एन आंसर दैट इज फॉर सेकंड वन। यस सर। कैसे होगा फिर बताइए आप तो। फ्लोरीन ज्यादा है या क्लोरीन ज्यादा है? आप देख नहीं रही हैं क्या? विच इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, फ्लोरीन या क्लोरीन? जी रबा। फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इट विल बी हैविंग व्हाट? इट विल बी गिविंग मोर एसिडिक स्ट्रेंथ ना, तो इसका एक हो जाएगा। यहाँ पे ना फ्लोरीन, तो ये ज्यादा तो एसिडिक होगा ना। ठीक है, हियर द आंसर विल बी ओके। नहीं समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ आ गया। ऑर्डर जहां ज्यादा, हाँ ऑर्डर में कंफ्यूज हो गए। यस सर। अच्छा ठीक है।
थर्ड वाले का आंसर कुछ लोगों ने शायद दिया है, शावेज, हाँ वेरी गुड शावेज। देखिए हियर इन बोथ द स्ट्रक्चर्स वी हैव फ्लोरीन इटसेल्फ, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे आप, है ना, तो जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है, राइट? सो द फ्लोरीन विच इज अटैच्ड नियर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द बी फ्लोरीन, ठीक है, तो वो और आसानी से क्या करेगा, इट विल बी टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन, इट विल बी पुलिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट विल बी पुलिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, हियर आल्सो विल बी हैविंग द बी। If I look at the last case, fourth one, here we are having, अच्छा ये तो बिल्कुल आसान है, आई होप इसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ए और बी गाइस, कहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फोर्थ वाले में, वेरी गुड मदीहा एरम करेक्ट, जल्दी जल्दी लिखिए, आपको सब कोई चैट में जल्दी जल्दी लिखें। यस, फोर्थ वाले में आंसर जो होगा दैट विल बी ए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CF3। यहां पे एक चीज आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, कैसे लेकिन डिपेंडेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्सली। जल्दी छापी, जल्दी जल्दी। अब ध्यान से सुनिए, फॉर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के केस में क्या होगा, प्लीज राइट, फॉर बेंजोइक एसिड देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ it is in directly proportional to minus m group and it is inversely proportional to plus m group. If presence of plus m group, अगर plus m group होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, अगर माइनस m ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, दैट्स इट। एक चीज जो आपको नोट करनी चाहिए, आई होप बहुत लोगों को याद होगा, प्लस m एंड माइनस m only works in ortho and para position, only works in ortho and para position, ठीक है। अब आप लोग को याद होना चाहिए व्हाट इज, आई मीन व्हाट इज प्लस एम ग्रुप एंड व्हाट इज माइनस एम ग्रुप फ्रॉम द अल्कोहल चैप्टर, वहां पे भी हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के टाइम में डिस्कस किया था। चलिए राइट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, पांच मिनट लीजिए, आराम से कीजिए, 5 मिनट बहुत ज्यादा, चलिए ठीक है बाय।
Yes, Shaviz, I think you are correct. चलिए देखते हैं गाइस। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, है ना। फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी हैविंग हियर इज स्ट्रक्चर, बेंजोइक एसिड। किसी और ने भी भेजा है क्या आंसर? मतीहा। अच्छा, थोड़ी सी गलती लग रही है मतीहा, अदरवाइज इट इज फाइन। एक सेकंड, पहले आपके पास है बेंजोइक एसिड, देन वी हैव 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, then we have 3,4 dinitrobenzoic। अच्छा, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। We have one more NO2 group in this position। और फिर आपके पास क्या है? We have methoxybenzoic acid। So 4 ना, तो OCH3। This is A, ये आपके पास B स्ट्रक्चर, ये आपके पास C स्ट्रक्चर, ये आपके पास D स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं। So in benzoic acid we will not have any effect। NO2 here we are obviously having NO2 is in the para position, so I can consider the minus M effect। If I talk about this NO2, this NO2 will be showing minus M effect, but this NO2 will not be showing minus M, it will be showing minus I effect because it is in the meta position. It will not show the mesomeric effect, it can only show the minus inductive effect। If I talk about the OCH3 group, it is showing what? Plus M group, plus M effect। Now in this case I can see that we have, जहां जहां पे आपके पास माइनस साइंस है ना, जहां जहां पे भी आपके पास माइनस साइंस है वो ज्यादा ही एसिडिक होगा। सो ऑब्वियसली सी इज मोर एसिडिक। उसके बाद ज्यादा माइनस कहाँ पे है? NO में है, तो माइनस M, तो ये B हो जाएगा। उसके बाद माइनस कहाँ? माइनस कहीं नहीं है, फिर यहाँ पे जीरो है ये। इफ नथिंग इज देयर देन इट इज जीरो। फिर A आएगा और उसके बाद आपके पास D आएगा जहां पे आपके पास प्लस है। और इफ यू गॉट दिस, प्लीज टेल मी। सबको समझ में आया? जल्दी बोलो भाई। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात जहां तक है, तो यहां तक आपके पास करानी है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट अनदर रिएक्शन, प्लीज राइट इट मी। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इस पर्टिकुलर केस में। एक तो है आपके पास रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, प्लीज राइट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ carboxylic acid। Now, carboxylic acid can be reduced using two different reducing agent, RCOOH। ठीक है, आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अल्कोहल, दो डिफरेंट पाथवे से। बोथ ऑफ देम विल बी गिविंग यू 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ अलग नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, सो एक है आपके पास, फर्स्ट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड स्टेप में पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकेंड है आपके पास B2H6 डाइबोरेन, सेकेंड स्टेप में पानी H3O positive in the presence of acid। Both of these is going to give you RCH2OH। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, that is RCOOH when it is reacted with sodium borohydride, that is also a reducing agent NaBH4, then no reaction happens। ठीक है, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। अब इसके बाद जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, that is Hell-Wohlhardt-Zielinski reaction, that is a name reaction। थर्ड लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अगर आपको लिखना ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लीजिएगा बस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम इन आर, ये CH2 होगा वहीं पे, RCOOH इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ऐसे लिखें, इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको ना यहाँ पे कन्वर्जन दिखाते हैं। ठीक है ना, प्लीज सी हियर गाइस, हाउ विल यू कन्वर्ट
इथेनॉल टू प्रोपेनॉल। ठीक है, ध्यान से देखो, इथेनॉल से प्रोपेनॉल, यानी कि एक कार्बन हमको ज्यादा लेके आए है ना, एक कार्बन ज्यादा लेके। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, देयर आर टू पाथवेज, दोनों ही दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले वी विल टेक इथेनॉल, वी विल रिएक्ट दिस विद SOCl2, ठीक है, देन वी विल गेट Cl हियर, वी विल रिएक्ट दिस विद KCN, KCN से रिएक्ट करते ही क्या हो जाएगा, यू विल गेट 3 कार्बन एटम्स। As soon as we have got KCN, we will add H2O, H plus और हीट, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था, we will get कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर देंगे, आई विल गेट 1 2 3 कार्बन एटम्स, है ना, यहाँ पे 3 कार्बन एटम, यहाँ भी 3 कार्बन एटम, और फिर OH। ठीक है, ये तो आपके पास एक पाथवे, दिस इज वन ऑफ द पाथवे दैट वी कैन यूज। अनदर पाथवे दैट वी कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन इज, आपके पास इथेनॉल है, सेम SOCl2, same you will get alkyl halide, but right now you will react this with Mg, तो आपको मिल जाएगा Grignard reagent MgCl। Once you get the Grignard reagent, you can add carbon dioxide। सेकंड स्टेप में आप डाल दीजिए पानी इन द प्रेजेंस ऑफ H plus लिख देते हैं सर हम, ठीक है। You will get what? You will get कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको क्या मिल गया, you got propanol। All of you understood this conversion? Yes or no? Please tell me. सबको समझ में आया? तारीफ, रबा, शाहिद, शावेज, इरम, हाँ जी, नहीं समझ आया ना? कल हम लोगों ने किया था ना कुछ, तो यहां तक तो किया था कम से कम हम लोगों ने, इतना इतना किया था ना कल हम लोगों ने, अल्कोहल से इथेनॉल से प्रोपेनॉल, सॉरी इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, है ना, और उससे एक स्टेप आगे बढ़ गए हम लोग। चलिए जल्दी लिखिए इसको जरा। अब ये समझो ना, ये कहां कहां तक जा सकता है, ये वापस से आप, मतलब दिस कुड हैव आल्सो एंडेड, इथेनॉल से आप लोग को बोल सकते थे वो OH आ गया, दे कैन आल्सो हैव आस्क्ड। अच्छा, इसमें अगर हमने SOCl2 कर दिया, ठीक है, इसमें हमने SOCl2 कर दिया, तो आपको मिल जाएगा क्या, 3 कार्बन एटम एंड देन Cl। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया Na, वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में 1 2 3 कार्बन एटम्स ना, वुड्स रिएक्शन में डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो वो कहां से कहां तक चल गए, इथेनॉल से हेक्सेन, इथेनॉल से हेक्सेन तक भी जा सकते हैं आप, मतलब उसको देयर आर मल्टीपल वेरिएशन, इसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी तो लिख लीजिए जरा। इसके बाद लिखिएगा आप लोग हेल्वोल हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, दिस इज थर्ड रिएक्शन। इसको HVZ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले होता क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे। सो वी शुड हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो होगा जब आपके पास अल्फा कार्बन हो। So this is my carboxylic acid, this is my alpha carbon, which is having a hydrogen. Hydrogen atom इसके पास है। Now, when you react this in the presence of a halogen and red phosphorus, you react this with, first step है H2 in the presence of red phosphorus. Okay, Chavez. Second step में you add water, you will get RCH, the halogen atom on the alpha carbon, and then COOH. The X that you are going to use will be either chlorine or it will be bromine, nothing else. जल्दी लिखिए इसको जरा। ठीक है, so if you have something like this COOH,
and there you have first step में Cl2 red phosphorus and second step में you have पानी. You'll have the carboxylic acid as it is. बस यहाँ पे आपके पास halogen atom आ जाएगा on the alpha carbon, that is chlorine. Now this can be given by we have COOH. First step में you have Br2 in the presence of red phosphorus. Second step में आपके पास है पानी. So this particular carbon atom will be having one hydrogen. वहीं पे आपके पास क्लोरीन आ जाएगा and the carboxylic acid is as it is, उसको कुछ नहीं होता है. Br. चलिए जल्दी छापिए जरा. इसके बाद दिखेगा यहाँ लिखेगा alpha hydrogens of carboxylic acid can be replaced by halogen atom on treatment with Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus and further hydrolysis. ठीक है, इतने जल्दी से छापिए. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है गाइस? क्या हुआ था, क्या हुई थी बात? चैट में लिख के बताया जरा क्या हुआ था. नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाएंगे? काइनेटिक्स शायद ना, काइनेटिक्स हुआ था. काइनेटिक्स ठीक है. तो स्टार्ट विद काइनेटिक्स इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. ठीक है. केमिकल काइनेटिक्स क्या लिख रहे हैं? शायद आपका कीबोर्ड खराब हो गया आज. इज एवरीवन डन? सबने लिख लिया? जल्दी लिखिए. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. Also, please go to the Learnivio app once you are done writing. You will see अच्छा इसमें और रिएक्शन है कुछ. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड. नो टाइम खत्म हो गया इस वजह से हम